हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स। मैं हूं अमित, आपका दोस्त और होस्ट, और आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक इजी सा कॉकटेल रेसिपी जो कि बनता है खाली 3 इंग्रेडिएंट से। आप कैसे भी कोई भी बना सकते हैं। इसका नाम है ब्लू कॉस्मो। कैसे बनाता है देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और स्किप मत कीजिए, तो फिर आप मिस कर जाएंगे। इसके लिए मुझे जो चाहिए वो है, पहले मैं अपना शेकर्स में आइस ले लेता हूँ। आइस ले लिया। आई एम यूजिंग दिस स्मॉर्नर वोडका, जिसका मेरे को 1.5 ounce देना है। इसका 1.5 ounce दे दिया। अभी इसमें चला जाएगा आपका ½ ounce ऑफ ब्लू कॉस्मो। और क्रैनबेरी जूस इसमें 1 ounce लगेगा। तो ये चला गया आपका क्रैनबेरी जूस। फाइनली, टू मेक द परफेक्ट ब्लेंड, इसमें हम लोग को फ्रेश लाइम जूस देना पड़ता है। तो ये दे दिया मैंने फ्रेश लाइम जूस। और थोड़ा सा दे देता हूँ ये हो गया आपका फ्रेश लाइम जूस। अभी इसको शेक करना है। हो गया शेक और रेडी। So now I am going to prepare this to serve. स्ट्रेनर लगा के मुझे ये मार्टिनी ग्लास में सर्व करना है। आप इसको लेमन स्लाइस से गार्निश कर सकते हैं। This is the best part for me to taste and to give you the honest feedback. The taste of this particular cocktail is a mix of sweet and sour. Sour of your lime juice and sweetness of your cranberry and this blue cosmo. So this is a mixture, and this drink is very much you can say acceptable for both the sex. Like, it's a unisex drink where both can have it at any point of time. So very refreshing. You can try at home and definitely let me know your feedback, how you like it after preparing, and even though giving a surprise to your guest. Prepare it and give me your comment. And before leaving, just to tell you, please subscribe my channel and hit the notification bell icon so that you can see all the videos which are about to come in my near future, as well as share my channel so that others can also see and enjoy the videos. Till then, signing off for the day. Bye bye, take care.